बहुत बहुत धन्यवाद सुशंभू सिस्टर। राधे राधे। राधे राधे सुशंभू सिस्टर। हर हर महादेव। आज मेरे दांत में बहुत दर्द था सेल बेटा, इसी वजह से जो है अभी तक खाना नहीं बनाया हूँ। नहीं अभी नहीं बना है, अब बना रही हूँ। अभी तक दर्द था तो दवा खा के लेटी थी, अब कुछ आराम मिला है। दांत में दर्द शुरू होता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि दांत दर्द हो रहा है कि कान दर्द हो रहा है कि आंख दर्द हो रही, मतलब इतना भयंकर दर्द होता है। इसी वजह से जय महाकाल, जय महाकाल। अभी भोजन बना रही हूँ शैल बहन। दांत में दर्द था बहन, इसीलिए नहीं बना है। अभी दवा दवा खाने के भी बहुत देर बाद तक असर नहीं हुआ था। अभी 8:30 बजे तो लाइट की हूँ। अब उठी हूँ, इधर इसको लाइट भी करती हूँ और भोजन भी बना रही हूँ। अरे बहुत दिनों से उसमें हमको लगता कैंसर न बन जाए। 2-3 साल से परेशान हूँ। कई डॉक्टरों को दिखाई, बस वही फीलिंग उलिंग करवा देती हूँ और फिर ऐसे दर्द कभी कभी शुरू हो जाता है। एक दवा है क्या नाम की है, पेट्रोल डीटी, वही जब खाती हूँ तो उससे कुछ आराम मिल जाता है। हाँ दीदी, लाइक डन हो गया। दीदी जी सादर प्रणाम दीदी जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दीदी जी। राम राम से शंभू सिस्टर, राम राम। राम राम दीदी जी, राम राम से शंभू सिस्टर, राम राम। जय श्री राम दीदी जी, जय श्री राम। जय श्री राम दीदी जी, जय श्री राम। हाँ दीदी, लाइक डन हो गया है। राम राम दीदी जी, राम राम से शंभू सिस्टर, राम राम। राम राम दीदी जी। सैल सिस्टर, राम राम। सैल सिस्टर, आपको कमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या कमेंट करो, बिल्कुल हो जाएगा। हेलो। छोटी हमारी थोड़ी ना। धन्यवाद गुरप्रीत भैया, आपका हमारी लाइफ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया। राम राम दीदी जी। सैफ सिस्टर, आपको कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट आना चाहिए या कि आप कमेंट करने दे, आप एक बार कमेंट करिए तो दे दो। और सब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो नहीं रहता तो कमेंट किया आना रुक जाओ। कोई ब्लू। अच्छा खाना बना रहे, ठीक है, बना लो मेरी बहन।
क्लू दे रही हूँ, नहीं तो रुक जाता है कमेंट, कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। मेरी तो दोनों मोबाइल में ही दिक्कत आ रही है। अगर ज्यादा देर कमेंट करती हूँ तो कमेंट जाना ही बंद हो जाता है, जब क्लू रहता है तभी कमेंट जाता है। नहीं दीदी दे रही हूँ। अच्छा, एक बच्चे को ज्वाइन किया था आपके लाइव में, उसका मिला है। अरे आगे का। अच्छा अच्छा, अभी जब आएगी तो बोल दूंगी, जब आएगी तो बोल दूंगी। रख दो, ऐसे ऐसे रख दो, खाना बना लो। ऐसे कर, ऐसे रख दो, भोजन बना लो। मुझे विश्वास है आप पर। दीदी आप भी खाना ना बनाई हो तो खाना बना लो, उसके बाद कमेंट करना। राम राम दीदी जी, राम राम। मैं भी तो भोजन बना रही हूँ बेचारी में। हाँ, ऐसे। जब आप बोली थी तभी समझ लो मेरी देवरानी की भतीजी है, जब आएगी तो मैं उसको बोल दूँ। मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास, देवरानी की भतीजी है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा सिस्टर। आज मैं तुम्हारे चैनल पर गई थी, ढेर सारे कजरे गीत सुनी थी। बहुत अच्छे अच्छे। बहुत अच्छा लगा, वो मन्ने वाला जो था वो बहुत अच्छा लगा। और एक ये वाला भी बहुत अच्छा लगा। लाले लाले फूलवा के कारण पिया मधुबनवा गए लेना, ऐसे कुछ करके था। लाले लाले फूलवा के कारणवा पिया मधुबनवा गए। चंदा सिस्टर डाली हो ना ये वाला गाना। सास ननद
मोरी बोली बोले बहू अब रही है बंधनिया ला। ऐसे कुछ था जो है चंदा सिस्टर। दुई चार घड़ी कायावा मोरे स्वामी। पता नहीं कैसे कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अभी सुनी थी, एक अभिमन्यु वाला भी सुनी थी, कई कजरी गीत सुनी थी। राम राम दीदी जी। चंदा सिस्टर आप चली गई क्या? चंदा के गीत सिस्टर कमेंट करिए। राम राम गोविंद भैया, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया। चंदा सिस्टर आई हो, चली भी गई, हमको लगता है कमेंट देके। लाइफ के साथ बहुत ही सुंदर कजरी गीत सुनाए हैं आपने, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम बिमला सिस्टर, जय श्री राम। एक कमेंट देके मत जाओ मेरी प्यारी बहन, लाइव में आई हो तो कुछ समय दो। बिमला सिस्टर इतना जल्दी मत जाओ। बिमला सिस्टर आई हो चली गई, चंदा की सिस्टर आई हो चली गई। इसके होठों पर हंसी। बहन मैं हूँ लाइव में, रुक रुक के अरे बहन क्यों परेशान हो? सहेल सिस्टर आप कमेंट मत करो, आप खाना बना लो उसके बाद करना। और दीदी जी भोजन बना रहे हो बिमला सिस्टर? भोजन बना रहे हो? आपसे तो मैं बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, अपने दो दो आईडी से, शुरू की सरगम वाले से बहुत दिनों से जुड़ी हूँ, और इस वाले से भी। और तो जितनी बहनें सब न्यू सिस्टर हैं, लेकिन आप तो सबसे पहले की थी, फिर भी आप लाइव में नहीं आती हो बहन। आप कितने बजे लाइव करती हो, टाइम बताओ बिमला सिस्टर। अच्छा क्या पूछ रही हो? उनको कहूंगी बहन मैंने जो कमेंट किया है प्लीज उसका जवाब दीजिए। हाँ बता तो रही हूँ कि वो मेरी देवरानी की भतीजी है, जब आएगी तो मैं उसको बोल दूंगी। सेल सिस्टर जब आएगी तो मैं उसको बोल दूंगी। उसके बदले में मैं तुमको तीन चार गिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन अब जब वो आएगी तभी उसको बोलूंगी। मेरी देवरानी की भतीजी है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। वह सावन का सोमवार पहले कब है तो जानना है। अच्छा मुझे व्रत रहना है। अभी तो नहीं, अभी सावन नहीं लगा है, अगले वाले से शुरू होगा। अभी आषाढ़ का है, कल आषाढ़ की तीज है। हो सकता है अगला वाला भी शायद आषाढ़ में ही पड़े, क्योंकि अभी तो कल आषाढ़ की तीज है, अगले वाले में भी रहेगी। तो कल तीज में तो तीन में एकादशी द्वादशी पड़ेगी अगले वाले में। अभी दो के बाद जब तीसरा आएगा तब सोमवार का व्रत शुरू होगा। अच्छा अच्छा। आप मेरी लाइव में आ जाओ तो मैं आपके चैनल पे आके गीत सुनूंगी। जब से लाइव आने लगी हूँ तब से नहीं आ पा रही हूँ बहन, नहीं तो मैं अपनी दोनों आईडी से जो है हमेशा रोज आती थी, आपको खुद ही पता होगा, कमेंट करती थी। जब से लाइव आने लगी हूँ, लाइव के चक्कर में चैनल पर जाके नहीं पाती।
लेकिन अब जो रोज लाइफ में आने लोगों की बहन ना, तो मैं फिर जाऊंगी, टाइम निकाल कर जाऊंगी। जो जो बहनें आती हैं उनके चैनल पर जाती हूँ टाइम निकाल कर। और तो इतनी सारी बहन हो गई हैं कि नहीं पहुंच पाती बहन, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ खाने में आ सकती हूँ। अच्छा ठीक ठीक ठीक। मैं भी भोजन बना रही हूँ ना, मैं तो इसीलिए कमेंट कम पढ़ पा रही हूँ। निकला से सर आप रोज आया करिए, मैं सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे आती हूँ। आप मेरा सपोर्ट करें, मैं आपको गीत सुनकर सपोर्ट करूंगी। इधर तो जब से लाइव आने लगी नहीं आ पाती, नहीं तो रोज आती थी मैं आपके चैनल पर, फुल वॉच करती थी आपकी मम्मी जी जो गाना गाती हैं। मुझे अच्छा लगता है, सब देसी गाने जो गाती हैं राम राम दीदी जी, राम राम। राम राम दीदी जी, राम राम, धन्यवाद। शंभू सिस्टर धन्यवाद, दीदी जी धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। दीदी जी धन्यवाद, ज्योति जी धन्यवाद, सिस्टर धन्यवाद, जिनका सिस्टर आई और चली गई, की सिस्टर आई और चली गई, गोविंद का कमेंट नहीं आ रहा है।
दीदी जी धन्यवाद, साइड सिस्टर धन्यवाद, ज्योति जी धन्यवाद। ठीक बहन, ठीक 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 है साइड सिस्टर। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। दीदी जी हमारी मूवी साथ बनी हुई है, साइड सिस्टर हमारी बनी हुई है, ज्योति सिस्टर भी बनी हुई है। गायत्री दीदी सादर प्रणाम दीदी जी। गायत्री दीदी जी सादर प्रणाम। राधे राधे दीदी जी। रमो दीदी राधे राधे, शैल सिस्टर राधे राधे, ज्योति सिस्टर राधे राधे, गायत्री दीदी राधे राधे। चाची जी सादर नमस्ते चाची जी। शर्मा दीदी और चाची जी लाइक डन नक्की हो तो लाइक डन कर दो। अच्छा हाँ हो गया है, सबका लाइक कर दिया है, शर्मा दीदी का भी हो गया है और चाची जी का भी हो गया है। सीताराम सीताराम, शर्मा दीदी सीताराम। सीताराम हर हर महादेव, शर्मा दीदी हर हर महादेव, चाची जी सीताराम सीताराम, ज्योति जी सीताराम, दीदी सीताराम, जय सिस्टर सीताराम। नहीं भैया ऐसा ना, तो वैसे तो
समझ आएगा ना। अच्छा, जय श्री राम शर्मा दीदी, जय श्री राम रमो दीदी, राम राम। अति जी राम राम। ज्योति जी राम राम। चिंता के गीत कृष्ण राम राम। हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। राधे राधे शर्मा दीदी, राधे राधे रमू दीदी, राधे राधे स्वाति जी, राधे राधे चंदा की सिस्टर, राधे राधे ज्योति सिस्टर, राधे राधे सैन सिस्टर, राधे राधे। मैं रोटी बना रही हूँ इसीलिए कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ। शर्मा दीदी कुछ लिख कर भेजी थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, कमेंट ऊपर चला गया। शर्मा दीदी आप जो लिखी थी मैं पढ़ नहीं पाई हूँ।
दीदी जी हमारी इमोजी के साथ बनी है, ज्योति जी भी इमोजी के साथ बनी हुई है, चाची जी भी इमोजी के साथ बनी हुई हैं। शिव शंभू सिस्टर का कमेंट नहीं आ रहा है। शिव शंभू सिस्टर अगर लाइव में हो तो कमेंट करो। शर्मा दीदी आई और चली गई। राम राम ज्योति जी। राधे राधे ज्योति जी।
हर हर महादेव। दीदी आपका भोजन ना बना हुआ हो तो अभी बना लो आप। दीदी मोबाइल ऑन रख कर आप भोजन बना लो, ना बना हो अभी तो। राधे राधे चाची जी। राधे राधे चाची जी, ज्योति जी मोदी साथ बनी हुई हैं। राधे राधे चाची जी। रामू दीदी राधे राधे। सब सिस्टर धन्यवाद। रमू दीदी धन्यवाद। ज्योति सिस्टर धन्यवाद। चाची जी धन्यवाद। धन्यवाद सब सिस्टर। धन्यवाद दीदी जी धन्यवाद। ज्योति जी धन्यवाद। सब सिस्टर धन्यवाद।
त्रिजी सिस्टर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिजी सिस्टर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उमा जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चाची जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रमो दीदी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्योति जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चाची जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी मैं भोजन कर रही हूँ इसीलिए बोल नहीं रही हूँ जी। राम राम उमा जी, राम राम त्रिजी सिस्टर, राम राम। रमो दीदी राम राम, चाची जी राम राम, ज्योति जी राम राम। त्रिपाठी उन्नीस भैया राम राम। त्रिजी सिस्टर राम राम। अंकल आज गुंजन नहीं आई थी क्या दिन में? दीदी जी सादर प्रणाम, दीदी जी। आशा दीदी जी सादर प्रणाम। मुझे पता है काजल, पता है तुम्हारी आईडी है। मेरी प्यारी बहनों, मैं इस समय भोजन कर रही हूँ इसीलिए बोल नहीं रही हूँ, कमेंट देख रही हूँ सबका। हाँ काजल, मेरा तो हो रहा है और सब दीदी अपना अपना भी बताएंगी। ठीक है दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी। रमो दीदी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बहुत समय दी दीदी।
अब आप अपना भोजन बना लीजिए दीदी। मेरा तो हो गया, आपका हुआ? अच्छा दीदी का तो हो गया है। अभी पूनम खाना खाई नहीं होगी। नहीं दीदी, अभी नहीं खाई, खा रही हूँ दीदी जी। अच्छा अच्छा दीदी। दीदी काजल का जो है अभी 600 कुछ हुआ है, और अक्टूबर में 1 साल पूरा हो जाएगा। आप अपनी परी वाली आईडी से और एक दो आईडी से जो है इसका सपोर्ट कर दो। भजन बहुत अच्छा अच्छा गाती हैं। भगवान कृष्ण का राधे जी के भक्त हैं। काजल सिस्टर हमारी राधे जी की भक्ति करती हैं। हाँ दीदी, आप खा ली हैं? हाँ, शिव शंभू की चलती है, 7 बजे चलती है शिव शंभू की। उमा काजल दीदी का जो है जितनी आईडी है सबसे सपोर्ट कर दो। इनका भी 600 कुछ हुआ है, अभी इनको बहुत ज्यादा चाहिए। समथिंग 350 भी चाहिए और अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बहन है काजल हमारी। मैं सभी बहनों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरी काजल बहन का सब लोग सपोर्ट करिए। हाँ दीदी, सब जो है सब ठाकुर जी के सारे भजन गाती हैं। इस टाइम तो भोलेनाथ बाबा का भी गा रही हैं, लेकिन भजन बहुत अच्छी रहती है। 600 से कुछ ज्यादा है, 650 है समथिंग। अच्छा, अब 800 हो गया है। चैनल पर तो आज भी दिन नहीं, हमको 600 कुछ दिखा था, फिर हो सकता है गुंजन का हो 600 कुछ हो।
गई थी चैनल पर, तो मैं आज भी गई थी। आज मैं बहुत सारी बहनों के चैनल पर गई थी, इसीलिए याद नहीं था, लेकिन कम है। फिर भी तो 200 चाहिए अभी। हाँ, सब्सक्राइबर की ही बात कर रही हूँ। सब्सक्राइबर की बात कर रही हूँ काजल। उमा, तुम्हारे घर में जितनी आईडी हो सबसे सपोर्ट कर दो। दीदी आप भी कर दो। भगवान की भक्त है, भगवान के ऊपर आश्रित रहती हैं हमारी काजल बहन। ठाकुर बाबा देखो कब सुनते हैं इनकी। राधे राधे चाची जी, चाची जी हमारी इमोजी से हंस रही हैं। राधे राधे दीदी जी। सब ब्लू दो तो ठीक ठीक दे रहे हैं ब्लू। मेरे ब्लू तो सीधी सिस्टर का हो गया। अरे उमा हाइट लग गया है यार, ब्लू देने के चक्कर में तो हाइट हो गया। अब क्या करूं। काजल सिस्टर, आशा दीदी, क्या आपको पता है हाइट लग गया इसके में। किसी को मैं हाइट कर दी हूँ। उमा कमेंट करो, देखो कमेंट आ रहा है, चाची को हाइट की कि उमा को की किसी का हाइट हो गया। ब्लू देने के चक्कर में हाइट लग गया किसी के मैसेज पर। पता नहीं किसका मैसेज हाइड करती हूँ। उमा कमेंट करो, देखने आ रहा है नहीं तुम्हारा कमेंट। चाची का तो आ रहा, अच्छा उमा का भी आ रहा है, किसका मैसेज है। राधे राधे संतरा सिस्टर। हाँ हो गया बहन, 16 लाइक हो गया है। मुझको लगता खाली मैसेज डिलीट हुआ था, हाइड नहीं लगा। मैं तो डर गई कि किसी का हाइड हो गया, लेकिन चाची का भी आ रहा है, उमा का भी आ रहा है, आशा देवी का भी आ रहा है, काजल सिस्टर का भी आ रहा है। सिर्फ शंभू वाले में तो नहीं लग गया। पता नहीं क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाती हूँ। दीदी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई है। काजल सिस्टर भी बनी हुई है, ज्योति सिस्टर भी इमोजी के साथ बनी हुई है, संतरा सिस्टर भी बनी हुई है, हमारी बनी हुई है, चाची जी भी बनी हुई है।
तब मेरा नहीं जा रहा है, क्या नहीं आ रहा, ज्योति आ रहा है, सबका आ रहा है, खाली हमको लगता है मैसेज डिलीट हुआ था, मैं तो डर गई कि हाइट लग गया क्या, किसी का मैसेज डिलीट हुआ था। आ रहा है, सबका आ रहा है। संतरा सिस्टर हमारी दो दो आईडी से आई हैं। दीदी जी हमारी मोदी के साथ बनी हुई हैं, काजल सिस्टर भी बनी हुई हैं। काजल सिस्टर हमारी बनी हुई है, संतरा सिस्टर भी बनी हुई है, आशा दीदी भी बनी हुई है, चाची जी भी बनी हुई हैं, उमा जी, ज्योति जी। देखो इतने सारे लोगों का कमेंट आ रहा है लेकिन वाचिंग टू शो कर रही है, पता नहीं क्या होता है, कभी कभी इतने सारे लोगों का कमेंट आता रहता है, वाचिंग जीरो शो करती रहती है। काजल सिस्टर धन्यवाद, संतरा सिस्टर धन्यवाद, काजल सिस्टर धन्यवाद, आशा दीदी धन्यवाद, चाची जी धन्यवाद, उमा जी धन्यवाद, ज्योति जी धन्यवाद। दीदी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई है, ज्योति जी भी इमोजी के साथ बनी हुई है, संतरा सिस्टर भी बनी हुई है, काजल सिस्टर भी हमारी दो दो आईडी से सपोर्ट कर रही हैं।
धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद काजल सिस्टर, धन्यवाद चाची जी, धन्यवाद। अब मैं ऊपर जा रही हूँ छत पर। जी बैठो। ठंडी लगती है ऊपर जाती है ना। ए मम्मी अकड़ जाबू। अरे नहीं कोई लेटने थोड़ी देर जा रहे। जा 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 जा। बस थोड़ी देर हो ना, यहाँ आप लोग बोलते हैं। आशा दीदी चली गई क्या? आशा दीदी का कमेंट नहीं आ रहा है। अब मैं सोची कि फ्री होके चलूं छत पर बात करूं, तो सब दीदी लोग चली गई। हाँ काजल सिस्टर की आवाज बहुत अच्छी है। आवाज तो जो है अच्छी है ही। काजल सिस्टर के गीत सुनना, भजन बहुत अच्छी अच्छी रहती है, मुझे बहुत पसंद आती है। काजल सिस्टर आपको एक राज की बात बताऊं?
काजल सिस्टर लाइव में हो ना आप? हाँ, कमेंट तो आ रहा है। सुनो, आपको मैं एक राज की बात बता रही हूँ। मैं आपका भजन सुनती थी शुरू से ही। 4-5 महीने पहले की बात है ये। 3-4 महीने पहले की बात है। मुझे आपके भजन बहुत, सुन रही हो ना काजल मेरी बात? मुझे तुम्हारी भजन बहुत पसंद थी। मैं तुम्हारे चैनल पर रोज आती थी और भजन भी सुनती थी। और एक दिन क्या हुआ, मैं तुम्हारी लाइव में गई। मतलब अचानक, जैसे कि अगर किसी को लोग पसंद करते हैं तो मोबाइल उठाई। तब मैं लाइव नहीं करती थी, लाइव के विषय में जानती भी नहीं थी। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी लाइव में अचानक से, मतलब ऐसे देखी, लाइव चल रही थी तो भजन तो मुझे पसंद ही थे, मैं सुनती भी थी रोज। और लाइव में गई, लेकिन मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, तो मैं कमेंट कर दी कि बहन मैं अब जा रही हूँ, मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है। पहले ही दिन गई थी। तब तुम बोली हाँ हाँ जाओ किसी और की, हाँ हाँ जाओ किसी और की लाइव में जाना होगा। मुझे इतना बुरा लगा। उसके बाद मैं फिर दोबारा गई ही नहीं। जबकि मुझे तुम जब तक थी, मुझे तुम्हारी लाइव में भी अच्छा लगा। लेकिन जब मैं ऐसे बोली, तो तुम ऐसे बोल दी तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर भी मैं भजन सुनती थी फिर भी। और उसके बाद इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। ये 3-4 महीने पहले की बात है। उसके बाद अचानक से नहीं, मैं 1-2 दिन और गई थी हमको लगता है। 1-2 दिन पहले और गई थी तभी हमको लगता है। और उस दिन फिर गई तो मैं ऐसे बोली। फिर उसके बाद फिर तुम खुद ही मेरी लाइफ, जब तुम्हारी लाइफ का समय बदला, मेरी और लाइफ तुम्हारी लाइफ शायद एक ही समय थी। जब मैं लाइव शुरू की थी उसी के 1-2 दिन बाद ही की बात, मुझे लगता है मैं लाइव अपनी बंद की थी, उसके बाद तुम्हारी लाइव में गई थी तो मेरी बैटरी डेड हो गई थी। इसी वजह से मैं बंद की थी लाइव। उसके बाद 8 दिन 10 दिन बीता। फिर मैं तुम्हारी लाइव में नहीं गई इसी वजह से। 8 दिन 10 दिन बीता, उसके बाद तुम खुद मेरी लाइफ में आए, उसके बाद इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, सोच विचार कर करता है। लेकिन जब से लाइव में आने लगी हूँ तब से भजन नहीं सुन पाती हूँ। हाँ, मैं उस टाइम ये बोल रही थी कि वो जो है, एक भजन एक दिन अपने उसमें गा रही थी लाइव में। राधा रानी का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको डाली हो कि नहीं डाली हो? नंद गांव ससुराल तुम्हारी बरसाने की बेटी, ऐसे करके कुछ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा, बिल्लू ले लूं? काजल डाली हो कि नहीं डाली हो वाला? दीदी मैंने इसलिए कहा, मुझे लगा आपको मैं जबरदस्ती नहीं रोक सकती हूँ। हाँ हाँ। हाँ, मुझे पता है। नहीं, मैं तो बताए ना क्या हुआ, जो है मेरी लाइफ चल रही थी तो उसमें बैटरी मतलब एकदम कम थी, तो मैं अपनी लाइफ बीच में बंद कर दी। उसके बाद जैसे बंद की तो तुम्हारी लाइफ चल रही थी उसी टाइम, हमको लगता है उस टाइम में वही 11-12 बजे। 11 बजे जब मेरी चलती है उसी टाइम पर चल रही थी। तो मैं तुम्हारी लाइफ में गई, तो मैं बोली कि बस 1-2 कमेंट दी, उसके बाद बोली कि बहन अब मैं जा रही हूँ, मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है। तब तुम बोली हाँ हाँ जाओ किसी और की लाइव में जाना होगा ना, इसीलिए बैटरी नहीं है। उसके बाद हमको लगता है 2-4 दिन में तुमने अपनी लाइफ बंद कर दी और मेरी लाइफ में आना शुरू कर दी। उसके बाद मैं आपकी लाइफ में जाने लगी, आप मेरे, फिर अच्छे एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बन गया। उससे पहले तो बस खाली वही चैनल पर ही, मैं आपके चैनल पर जाती थी, आप मेरे चैनल पर आती थी। ठीक 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 बहन।
संध्या सिस्टर, मैं जो है आपकी लाइव में अपनी लाइव के बाद तुरंत आती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, इसीलिए कमेंट नहीं कर पाती बहन। बीच-बीच में कमेंट देती रहती हूँ। मेरे ये जो है गले और रीढ़ की हड्डी दर्द होने लगती है, इसी वजह से कमेंट नहीं दे पाती हूँ, बीच-बीच में देती रहती हूँ। 2 घंटा अपने लाइव में बैठ के ऐसे कमेंट पढ़ती रहती हूँ इसी वजह से। ठीक है बहन, बहुत-बहुत धन्यवाद बहन, आपकी लाइव का समय हो गया है। अच्छा, अच्छा अभी नहीं डाली हो? हाँ, उस दिन गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो वाली भजन। जब कल आऊँगी लाइव में तो फिर से सुनाना। उस दिन मैं कमेंट में लिखकर भेज रही थी काजल वो वाला भजन सुनाओ, लेकिन तुम दूसरी-दूसरी राधा जी की कई भजन सुनाई, लेकिन वो वाली नहीं सुनाई। कमेंट में कम समझ में आता है ना। उमा सुनो, मेरे जो है बिल्लू, अच्छा ले रहे हो। उमा सुनो जो है मेरे मेरे किसी भी मेरे वीडियो पर जाना तो काजल का कमेंट रहता है, उसी कमेंट के माध्यम से जुड़ जाना। उमा मेरी आवाज जा रही है? मेरे जो है मेरे किसी भी वीडियो पर जाना, काजल का रहता है देखना, सब पर देखना, डीपी इनकी पहचान लो, काजल की डीपी पहचान लो और मेरे उस पर जाना तो मिल जाएगा इनका, वहीं से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, धन्यवाद काजल सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल सिस्टर, मेरे बहन के पास कई 2-3 आईडी है, इसके पति की है, इसकी है, तो सबसे मैं जो है बोल दूंगी, मेरे उस पर जाके वहीं से ज्वाइन कर लेगी। नहीं, मैं इसके पास वो कर दू शेयर कर दूंगी ना, तब हो जाएगा। आपकी वीडियो शेयर कर दूंगी इसके व्हाट्सएप पर, तो आपको शेयर भी मिल जाएगा और ये ज्वाइन भी कर लेगी। हाँ वही, अरे वही तो बता रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं याद है, राधा जी की है। पहली लाइन मुझे याद नहीं होता ना, मेरी ये प्रॉब्लम है। भजन बहुत अच्छी लगी थी, बस उसमें इतना याद है, मतलब वही राधा जी के बारे में पूरी स्टोरी थी, नंदगांव में उनकी ससुराल है और बरसाने की बेटी है, ऐसे करके कुछ था। मतलब राधा जी का पूरा वर्णन है उस वाली भजन में। अब तुमको याद आ गई होगी, याद है ना तो। अब नहीं, इतना याद ही नहीं है, बस मतलब इतना एक लाइन याद है, पूरा राधा जी का पूरा ससुराल का पूरा वर्णन, मतलब कहाँ उनकी मायका है, कहाँ ससुराल है, कैसे क्या है, ये सब पूरा था राधा जी के विषय में। तुमको याद होगी तो अपने दिमाग पर जोर डालोगे तो याद आ जाएगा कौन सी है। मैं 4-5 दिन पहले सुना रही थी लाइव में, उसके दूसरे दिन मैं कमेंट की थी कि वो वाला काजल वाली भजन सुनाओ, लेकिन जब मैं अगर एक लाइन पहली लाइन याद कर लेती तब क्या है, आ ही जाता।
याद ही नहीं है ना काजल, कैसे गाकर बताऊं, अगर एक भी लाइन याद होती। अच्छा। अच्छा, मैं खुद ही चेक करूंगी ना। जाऊंगी कुछ नीचे तक जाऊंगी तो मुझे खुद ही मिल जाएगी। अगर डली होगी तो खुद ही मिल जाएगी, जब सुनूंगी तब जान जाऊंगी कि यही वाली है। अच्छा अच्छा। मैं कई दिनों से खुद ही सोच रही थी कि जाकर चैनल पर देखूंगी। भारत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भारत भैया, आप मेरी लाइफ में आए, आपका स्वागत है भैया जी। धन्यवाद भैया जी। राधे राधे उमा जी। मेरी चाची जी का कमेंट आया था, मैं काजल से बात करने के चक्कर में चाची से नहीं बात कर पाई। चाची पता नहीं है कि नहीं लाइव में। हर हर महादेव, हर हर महादेव ज्योति जी। राधे राधे ज्योति जी। अच्छा, ब्लू दे दे, ठीक ठीक ठीक, मेरे पास है, अरे भाई। हो गया है भैया, और थोड़ा पहले आते भैया तो और लोगों को ज्वाइन करवा देती। अब तो सब लोग आ आके चली गई हैं। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर का है कि, हाँ हाँ, यही वाली, यही वाली है, यही वाली। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे का। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे का। यही यही वाली भजन है। डाल दी हो ना ये वाली। राधा रानी हमारी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे चाची जी। जय श्री राधे कृष्णा काजल सिस्टर, जय श्री राधे कृष्णा। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे का। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे का। देखो, इतने दिनों से, 3 4 दिनों से ढूंढते ढूंढते आज मिल ही गई। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे का। रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे का। दीदी मेरा 40 मिनट हो गया है। ओके ओके। चलो मैं तुम्हारा रा, राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे का। बरसाने है पीहर हमारा, नंद गाँव में ससुराल, हमें डर काहे का। यही वाला है, यही वाला है गुंजन। अरे काजल, यही वाला है।
अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैं खुद ही सोच रही थी कि उस पर देखूंगी, चैनल पर जाकर तो डाली होगी तो मिल जाएगा। हाँ, मैं देख लूंगी मैं। अब तक मैं देख ली होती, लेकिन यही लाइव वेब के चक्कर में ना चैनल पर जा ही नहीं पाती हूँ। बस जो तुरंत के डले रहते हैं एक दो वीडियो, एक तो मैं जाती हूँ तो फुल वॉच करती हूँ। अभी जैसे फॉर्मेलिटी करना हो, बस थोड़ा सा जाके कमेंट डाल दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तब तो पहुंच जाती नीचे तक। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिस वाले वीडियो पर जाऊँ उसको पूरा फुल वॉच करो, जिससे कि सामने वाले को भी कुछ फायदा हो। झूठी मूठी फॉर्मेलिटी नहीं अच्छी लगती मुझे। भरत भैया के भी चैनल पर अभी नहीं जा पाई हूँ। राधे राधे भैया जी, राधे राधे। भरत भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा। आप, हाँ हाँ, मैं टहल रही हूँ छत पर ऊपर आके। भोजन करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी और टहल रही हूँ, तभी अलग अलग जो है दिख रहा है। काजल, ये जो साइड दिख रही है ना, यहीं पर श्रीमान जी हमारे इसी वाली साइड पर इंजीनियर हैं। ये जो सामने दिख रही है लाइट खूब जल रही है, ये जो सामने दिख रहा है यही बनवा रहे हैं। ये देखो, इसमें तो सब लोग रह रहे, जहाँ लाइट जल रही है इसमें सब लोग रह रहे हैं। और ये बगल में ये देखो, ये वाली बिल्डिंग जिसमें लाइट नहीं जल रही है, इसमें काम चल रहा है। इसी के बगल में हम लोग रेंट पर रहते हैं। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे की, राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे की। इस टाइम 2-3 दिन से बारिश हो रही थी ना काजल, तो ऊपर नहीं आ पाई। आज भी सुबह जो है 10-11 बजे तक बारिश हो रही थी, लेकिन इस टाइम छत पूरी सूख गई है। धूप आ गई थी, उसके बाद 12 बजे के बाद धूप निकल आई थी, तो छत सूख गई है, इसीलिए आज कई दिन बाद टहलने आई हूँ ऊपर। उमा भी मैं शेयर कर दूंगी ना वीडियो, शेयर कर दूंगी तो उसी से कर लेना, ज्यादा आसान रहेगा। राधे राधे चाची जी। ठीक है, बढ़िया। तुम्हारे यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है, पानी का काम तो गांव में ही है। धान लगा कि नहीं लगा उमा भी तुम्हारे यहाँ? राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे की।
राधा रानी हमारी सरकार मेरे काहे के। काजल अभी इनके पास 2 और हैं, उनसे भी कर देंगी बाद में। ये दी काजल, ये दी नहीं होगी, ये मुझसे बहुत छोटी है, 11 साल छोटी है। ये छोटी बहन है। मेरे लड़के से 5-6 साल बड़ी है बस ये। अभी इसके बच्चे भी बहुत छोटे-छोटे हैं। एक 3 साल की बिटिया है और 5 साल का लड़का है, 6 साल का हो गया, लड़का छठी में पढ़ गया है जनवरी से। अरे काजल, थैंक यू की कोई बात ही नहीं है, छोटी बहन है, सपोर्ट करना चाहिए इसको। ये मेरा बहुत सपोर्ट करती है। जब मैं किसी लाइव में नहीं जाती हूँ ना, तो कई लोगों के मतलब कई लोगों के साथ जुड़ गई है। जब मैं नहीं जाती हूँ तो लाइव में जाके बोल देती कि मैं अवधि लोकगीत पूनम त्रिपाठी हूँ, और लाइव ज्वाइन कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गांव में रहती है, गांव में वही 1.5 जीबी मिलता है, 5G चलता नहीं गांव में। कभी कभी तो 19 रुपए वाला जो होता है, अगर नेट चुक जाता है तो 19 रुपए वाला डाल कर सपोर्ट करती है। शिवम पांडे भैया, सादर चरण स्पर्श पांडे भैया जी। राम राम भैया जी, राम राम। राधे राधे उमा जी, भरत भैया राधे राधे। भरत भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा, भैया मेरी ले जा खड़ा, भैया मेरी ले जा। काजल, आज मैं जो गाना डाली हूँ वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमारे इधर जो है सावन में झूला झूला जाता है, तो इसको कजरी गीत कहते हैं। गुंजन के समझ में आ जाएगा। गुंजन भी, मैं जो गाती हूँ वही गुंजन भी गाती है। शिवम भैया, उमा पूछ रही हैं का हाल चाल बा पांडे भैया। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे गोपाल कृष्ण। भरत भैया राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में, वर्ड तो सब समझ में आते ही हैं, बस वही राग ना समझ में आती होगी। शब्द तो सब वही रहते हैं।
गाना डाली हूँ। चंदा जइहा बिरने के देसवा, कहिया मोरा संदेशवा ना। चंदा जइहा बिरने के देसवा, कहिया मोरा संदेशवा ना। उस गाने का तात्पर्य ये है कि बहन ससुराल में रहती है, तो सावन में जो है हमारे इधर गुड़िया होती है, नाग पंचमी पर गुड़िया पीटी जाती है। और जो है रक्षाबंधन होता है, तो ही बहन अपने भाई को चंदा मामा से संदेशा भेज रही है कि चंदा जइहा बिरन के देशवा, बिरन मतलब भाई के देश। चांद से कह रही है कि चंदा जइहा बिरन के देशवा, और कहिया हमरा संदेशवा ना। बाबा से कहिया हमेरी अर्जिया बेटी, दूर देश पड़िया है बिटिया ना। भैया का बाबा भेजी पठावा, हमें नहीं हरवायो बहना। इसका तात्पर्य ये हुआ, मतलब अपने अपने बाबा से, मतलब अपने पिताजी से अरज कर रही है बिटिया कि भैया को भेज दो, मैं अपने मायके आऊंगी। भैया का बाबा भेजे पठावा, हमें नहीं हरवायो बहना। नैहरवा मतलब मायका, मायका को हमारे इधर नैहर बोलते हैं। ससुराल को सासुर कहते हैं, नहीं, और मायके को नैहर बोलते हैं। आप आजकल बेटियों को टाइम ही नहीं है मायके जाने का। सही सही कह रही हैं चाची। आजकल आजकल बेटियों को सही मायके जाने का समय नहीं रहता। अगर कोई फेस्टिवल ओकेजन रहता है तब भी जाएंगी तो बताएंगी मेरे यहाँ भैंस लगाना है, गैया लगाना है, 1 घंटे के लिए आएंगे, तुरंत भागे। उस दिन वो बिट्टी मौसी आई थी, शाम को आई भैया, और सुबह जो है जैसे मिट्टी उठी, तुरंते बस तुरंते उठी और चल दी, कही हमारी भैंस कल शाम को भी नहीं लगी है, अभी भी नहीं लगी है, मैं जा रही हूँ भैंस लगाने के लिए। बड़ी वाली मौसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन नहीं चाची, टाइम है लेकिन अब का करी, टाइम निकालने के पड़त। टाइम निकाले से निकलत चाची, जैसे कही है कि इनके पढ़े में मन नहीं लागत तो मन लगावे के पड़त है, वैसे टाइम रहत नहीं के पास, टाइम निकालने के पड़त है। क्या मेरी, अच्छा आपके दोनों भाई बोलते रहे लेकिन इस बार नहीं गई। हाँ बहन, सबके साथ यही होता है। माँ बाप भाई सब बुलाते रहते हैं, लेकिन समय के अभाव में कोई जा नहीं पाता है। पूरे साल में एक गर्मी की छुट्टी रहती है जाने के लिए। मेरी चाचियाँ मुझे हमेशा बुलाती रहती है, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ।
हाँ, भोजन हो गया है रत्ना बिट्टी, सादर चरण स्पर्श रत्ना बिट्टी। और आपका तबीयत सही है, ठीक ठाक है बिटिया रानी? तबीयत में आराम है कि नहीं है रत्ना? ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत ज्यादा आपने समय दिया मुझे। दो दो आईडी 2 घंटे का समय दी हूँ मेरी प्यारी बहन। जय श्री राम रत्ना पांडे, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय ज्योति जी। सभी को काजल सिस्टर सभी को शुभ रात्रि बोल रही हैं। भरत भैया राधे राधे, राधे राधे भरत भैया। हर हर महादेव रत्ना सिस्टर, हर हर महादेव। काजल सिस्टर हमारी सभी को शुभ रात्रि बोल रही हैं। काजल सुबह आओगी ना 5:30 बजे? हाँ, और नाम में लिख दो। काजल अगर लाइव में हो तो हाँ और नाम में लिख दो। गुड नाइट मेरी प्यारी बहन। सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में आओगी ना? बाय बाय काजल सिस्टर, बाय बाय। ठीक ठीक ठीक, फिर चलो सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। बस वैसे रख ऑन करके रख दूंगी बहन, काम बहुत रहता है उस टाइम। सुबह सुबह 9 बजे तक बहुत काम रहता है, ऑन करके रख दूंगी। राधे राधे भरत भैया, राधे राधे। जय श्री राम। शिवम भैया, आपने एक ही से लाइक दिया है क्या? शिवम भैया, आप दोनों से लाइक किए हैं कि एक ही से किए हैं? हमको लगता है एक ही लाइक इस टाइम बढ़ा है, 19 था 20 हो गया है। हाँ, सुबह सुबह सभी के पास काम रहता है। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। राधे राधे भरत भैया, राधे राधे। गाये के मिनट घट जाती, बेटी मोरी ससुरे बाती। गाये के मिनट घट जाती, बेटी मोरी नहीं घर आई। सब बैठे उनके बाबा जो झमकने तेरे का डाली हमें झूलन। हाँ बेटी मोरी ससुरे आईना। चलो ठीक है, ठीक रहना भी चाहिए तबीयत। मंडे है ना कल? मंडे है ना कल, तो मॉर्निंग में मंदिर जाना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो मोबाइल ऑन करके रख देना। काजल मोबाइल ऑन करके रख देना, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा।
राधे कृष्ण भारत भैया, राधे कृष्ण, राम राम। शिवम भैया राम राम, रत्ना सिस्टर जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। दीदी मेरा मोबाइल में बैटरी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखो जब तक चल रही है चला दो। ठीक 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 है, ऑन रहेगा तो मैं आ जाऊंगी। राधे राधे चाची जी, राधे राधे। हाँ भैया 20 तो है, लेकिन मुझे याद नहीं था 18 था 20 हुआ कि 19 से 20 हुआ। मुझे लगा कि 19 था 20 हो गया, इसीलिए बोली हूँ कि एक ही से किए हो क्या। 20 ही है। कभी कभी किसी किसी का लाइक शो नहीं करता। जैसे मेरे मामा की लड़की प्रीति आती है, वो लाइक देती है तो उनका लाइक शो नहीं करता। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण भारत भैया। राधे राधे त्रिपाठी उन्नीस भैया, राधे राधे। देखो इतने सारे इतने लोगों। हाँ मेरे में 20 ही शो कर रहा है। पता है ऐसे रोज ही एक दो लाइक रोज ही नहीं शो करता। हो सकता है जाने के बाद शो करे, बंद करने के बाद। राधे राधे चाची जी, राधे राधे। ज्योति का भी कमेंट आना बंद हो गया। ज्योति लाइव में हो कि नहीं हो, हमको लगता है सो गई ज्योति। हाँ वो जो है ना बगल वाले, मेरे में एक कम दिखता है। जैसे आप सब में 21 दिखेगा, तो जब मेरे में 20 रहेगा तो तुम्हारे में 21 दिखेगा। राधे राधे चाची जी, राधे राधे त्रिपाठी उन्नीस भैया, राधे राधे। उमा एकदम से बंद हो गई क्या तुम्हारी मोबाइल? अच्छा अच्छा अच्छा। राधे राधे भरत भैया, राधे राधे। हाँ पता है, बताई थी कि ना अवनीश के पास चार्जर है ना उमा की। बताई थी कि जिस बैग में चार्जर था दोनों बैग चला गया है तो आपके साथ। उसी दिन बताई थी, परसों ही। अपनी जेठानी का चार्जर लेके थोड़ा सा चार्ज कर ली थी। राधे राधे, राधे राधे। चाची जी राधे राधे, रत्ना बिट्टी राम राम। दीदी मेरा फोन
चल रहा है, इनके वाले से कमेंट कर दो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मुझे लगा एकदम से स्विच ऑफ हो गया। मत करो कमेंट, कोई जरूरी नहीं है, रख दो, दोनों ऐसे रख दो। राधे राधे भरत भैया, राधे राधे। जी जी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि भरत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई इतना सपोर्ट करने के लिए। रत्ना बेटी तुम भी जा रही हो क्या इतनी जल्दी? भरत भैया तो इतना देर तक सपोर्ट किए, रत्ना बेटी तुम इतनी जल्दी मत बाय बाय करो, कुछ तो समय दो, अभी तो आई ही हो। भरत भैया तो बहुत देर से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक 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 ठीक, ठीक है, मोबाइल ऑन करके आराम से जाओ लेटो। जाओ दवा खा लो, दवा ये समय समय से दवा खाओ। देख लो, एक महीना और संभाल के किसी तरह निकाल दो, कुछ भारी सामान न उठाया करो। ठीक है ठीक है ठीक है, दवा खा लो, चलने दो लाइट। खा लो दवा खा लो। चाची जी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक। चाची जी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई है। अपना बिट्टी जी भाभी जी लिख रही है। ज्योति लाइव में हो कि नहीं? अगर लाइव में हो तो कमेंट करो। ज्योति तुम्हारा कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ ठीक 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 बिट्टी ठीक, ऐसे रख दो, ऑन करके रख दो, चलने दो, कमेंट कोई जरूरी नहीं है। चाची आप भी ऐसे रख दो, कमेंट जरूरी नहीं है इतना, बहुत कमेंट आ गया। बैटरी की दिक्कत नहीं है, अच्छा 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 ठीक, कोई बात नहीं। ये लोगों का कमेंट आता रहता है, वाचिंग पता नहीं को कभी जीरो शो करती है तो कभी एक शो करती है, पता नहीं कैसे चलता रहता है। हाँ बिट्टी अब तो भगवान एक सहारा। हनुमान चालीसा पाठ कर लेवा करा, सुबह शाम हनुमान जी के नाम लेवा करा, जब लेटे लगा करा तब वो हनुमान जी के नाम ले लेवा करा।
हमरे अम्मा रे बुढ़िया बुढ़िया अम्मा के देखे रहे ना रत्ना बिट्टी अम्मा हमरे बतावत रही कि सोए लगा कर बिटिया तो कह देवा करा हे बजरंगबली भगवान हे हनुमान जी अब हम सोए जात ही ताक्या राख्या चौकी तुम्हारे आए रत्ना हमरे अम्मा के देखे रहे हो ना बिट्टी अम्मा हमरे बतावत रही जब अम्मा जो सोए लागत रही तो अपनो कहत रही हम सब सिखावत रही कि जब सोए लागत रहा तो कहा करा कि हे बजरंगबली भगवान अब तू ताक्या रखे हम सोए जाते हैं चौकी तुम्हारे यहाँ ये बैठा हमारे घर ताका तो सपना अपना नहीं दिखाते ऐसे बोलते लेकिन हम भूल जाई थी हम जब सुबह उठी थी तब तो भगवान नाम ले थी लेकिन सोवत के भूल जाई थी जब नींद नहीं आवत तो भगवान का नाम ले थी पेटे नींद आएगा तो फिर नहीं हम पांडे भैया राम राम रत्ना की राम राम सो काज कठिन जग मोही जो नहीं हो तात तुम्हें पाही सो काज जग मोही जो नहीं हो तात तुम्हें पाही काज किए बन देवन के तुम वीर महाप्रभु पधारो बाय बाय चाची जी बाय बाय मौन सो संकट मोर गरीब का जो तुमसे नहीं जाते है टारो देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हारो संतोष भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरी लाइफ में आए लाइक डन कर दो भैया जय श्री राम जी जय श्री राम जय श्री राम संतोष भैया चाची जी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई है चाची जी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई है जय श्री राम भैया संतोष भैया आप लाइव में आए हो तो लाइक डन कर दो मेरे भाई जय श्री राम जी जय श्री राम बाय बाय चाची जी चाची जी हमारी इमोजी के साथ बनी हुई है संतोष भैया अगर आप लाइव में हो तो लाइक डन कर दो मेरे भैया जय श्री राम जी जय श्री राम आप कहाँ से हो भैया मैं तो प्रयागराज से हूँ भैया संतोष भैया मैं प्रयागराज से हूँ आप कहाँ से हो
तीर्थराज प्रयाग से हूँ भैया, संगम क्षेत्र से। गंगावरी गोदावरी तीरथ बड़ी प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लिए राम अवतार। राधे राधे चाची जी, राधे राधे। अच्छा अच्छा भैया, आपका भी भैया, हमारे यहाँ भी भैया महाकुंभ लगने वाला है। माघ महीने में आपका वेलकम है, आप आइएगा हमारे यहाँ, संगम में स्नान करिएगा। इस बार तो माघ में तो हमेशा लोग आते हैं नहाने, लेकिन इस बार महाकुंभ लग रहा है 12 साल बाद वाला। इस बार भैया महाकुंभ लगेगा। आपके बताने से पहले ही मैं बोल दी थी कि गंगावरी गोदावरी तीरथ बड़ी प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लिए राम अवतार। उसके बाद आपका कमेंट आया कि मैं अयोध्या से हूँ। मैं भी अभी भैया चैत महीने में गई थी अयोध्या, सरयू में स्नान की थी। चैत महीने में सरयू में स्नान का महत्व है ना भैया, तो चैत महीने में गई थी अयोध्या। सावन में भी लोग झूला देखने जाते हैं। हाँ भैया, आपकी बार बहुत बड़ा कुंभ लगेगा। माघ महीने में जो होता है हर बार, वो कुंभ नहीं होता भैया, वो कल्पवास होता है, उसमें सब लोग जाते हैं कल्पवास करने। लेकिन 6 साल में कुंभ लगता है और 12 साल में महाकुंभ, तो इस बार महाकुंभ लग रहा है। और न्यूज में आ रहा है कि बुकिंग के अकॉर्डिंग जो 2013 में महाकुंभ लगा था, उससे 25 लाख ज्यादा आदमी इस बार आ रहे हैं। पंडाल सारे बुक हो जाते हैं ना पहले से ही, तो बुकिंग के अकॉर्डिंग 25 लाख ज्यादा आदमी आ रहे हैं इस बार। तैयारी शुरू हो गई है, प्रयाग लखनऊ से प्रयागराज तक पूरा जो है रोड बन रही, टोल रोड बन रही है यहाँ से वहां तक। योगी जी पूरी व्यवस्था में लगे हैं माघ मेला के। बहुत हाई स्पीड में काम चल रहा है माघ मेला तक पूरी रोड तैयार करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं रोड बनाने में। हाँ भैया, हमारा प्रयागराज तो तीर्थ क्षेत्र है, अयोध्या प्रयाग काशी मथुरा, ये इन सब जगहों तो बिना सोचे जब मन हो तब जाके जाना चाहिए भैया तीर्थ यात्रा पर। ये सब तो पवित्र स्थली है अपने उत्तर प्रदेश की। अयोध्या मथुरा काशी प्रयागराज, जब मन हो तब पहुंच जाए। हाँ भैया, बाबा जी तो शान है। राधे राधे चाची जी, राधे राधे। हाँ भैया, लाइक हो गया है। रामचरितमानस में वर्णन आता है भैया, अब मुझे तो चौपाई इतना पूरी नहीं याद है। माघ माघ मकर गति जो रवि पर रही, ऐसे करके कुछ है भी याद नहीं है। क्या चौपाई नहीं याद है?
लेकिन उसमें वर्णन है कि जो है माघ के महीने में 33 कोटि देवता, जितने देवी देवता हैं सभी आते हैं। जब महाकुंभ लगता है तब भी सभी देवी देवता आते हैं यहाँ पर। और 1 महीने यहाँ रहते हैं किसी न किसी साधु संत चिड़िया पशु पक्षी, चाहे जिस भेष में हो, लेकिन समस्त देवी देवता आते हैं यहाँ, 1 महीना रहते हैं प्रयाग संगम क्षेत्र में। अब कोई जान नहीं पाता भगवान किस बेस में आए हैं। बहुत सारे भिखारी बैठे रहते हैं, हो सकता है वही हो देवी देवता आ जाते हो, भिखारी के रूप में ही बैठ जाते हो लोगों की परीक्षा लेने के लिए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। गुड नाइट चाची जी, सादर नमस्ते चाची जी। चाची जी सादर नमस्ते। अरे 22 था, अभी 21 हो गया, ये कैसे? अभी 22 लाइक शो कर रहा था। हाँ भैया, रामचरितमानस में वर्णन है, किसी न किसी वेशभूषा में आते हैं समस्त देवी देवता। आते क्या भैया, दिखते भी हैं, वो पक्षियां, बहुत सारी पक्षियां आ जाती हैं अलग अलग तरीके के। तो सब देवी देवता ही हैं, किसी न किसी भेष में आते हैं। बहुत साधु सन्यासी नागा बाबा बहुत सारे बहुत दिखते हैं। अरे भैया बहुत आती है लेकिन याद नहीं रहती है। रामचरितमानस की तो बहुत चौपाई आती है। विधि होनाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मन संकट हारी। जब तेरा में ब्याही घर आए, नित नो मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत नेघ बरसहि सुखवारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुध कहीं आई। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंच करे तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन बहन। कंचन बहन, मैं जैसे आपकी लाइव में गई थी उस टाइम तुरंत फोन आ गया था, इसीलिए फिर जो है नहीं आ पाई। फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। 8 बजे से मेरी लाइव शुरू होती है। बस गई, लाइक दी और एक एक दो कमेंट की थी, तुरंत ही फोन आ गया। जय माता दी, जय माता दी। कंचन आज मैं वो वाला गाना डाली हूँ। कंचन सिस्टर आज मैं वो वाला गाना डाली हूँ,
चंदा जइहा बीरन के दिसवा कइहा मोरा संदेशवा ना। लेकिन लिखकर डाल दी हूँ, याद नहीं कर पाई हूँ। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधे राधे। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, लगी रट राधे राधे नाम, लगी रट राधे राधे नाम। नाम तन मेरा बरसाने राधे, मन वृंदावन धाम, लगी रट राधे राधे नाम। ज्योति तुमको सोना हो तो ऑन करके सो जाओ। ज्योति मोबाइल ऑन रख करके सो जाओ। उमरिया बीत गई माला ना फेरी, उमरिया बीत गई माला ना फेरी। मैं तो डूब रही मझधार पार लगाओ बालाजी। मैं तो डूब रही मझधार पार लगाओ बालाजी। लगी रट राधे राधे नाम, लगी रट राधे राधे नाम, राधे राधे नाम। तन मेरा बरसाने राधे, मन वृंदावन धाम, लगी रट राधे राधे नाम, लगी रट राधे राधे राम। वृंदावन का कण कण बोले राधे। श्याम सुंदर की गलियां बोले श्री राधे राधे। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधे राधे। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधे राधे। मैं तो डूब रही मझधार पार लगाओ बालाजी। मैं तो डूब रही मझधार पार लगाओ बालाजी। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बहन और पूछ रही थी कि कंचन दीदी आपका गाना सीख कर डाल दो। हाँ बहन, मैं भी बोलती हूँ कि जिसको जो अच्छा लगे। भाई हम लोग गाना गा रहे हैं, डाल रहे हैं तो सीखने के लिए ही तो डाल रहे हैं। हमारा तो लक्ष्य ही यही है कि हम अच्छे अच्छे गीत गाएं और डालें। और जो है, अब देखिए आज के जो नए जनरेशन में जो हम लोग गाना गाते हैं, ये सावन गीत, कजरी गीत, वो विवाह गीत, भजन गीत, वो विवाह गीत, सोहर गीत, आज के नए जनरेशन के बच्चियां कहाँ इन सब गानों को जानती हैं। थैंक यू भैया जी, थैंक यू संतोष भैया। तो हमारा तो हम बहनों का तो लक्ष्य ही यही है कि ये जो हमारी परंपराएं विलुप्त हो रही हैं, ये आगे ऐसे चलती रहे। हाँ, वही चीज तो कोई पेट से, बताए ना, मेन चीज जैसे पहले अगर किसी को बच्चा होता था
घर में अगर कोई लड़का होता था तो महीनों जो है सारी मम्मी, दादी, चाची लोग बैठ के महीनों गाना गाती थी, सोहर होता था। अब क्या हुआ डीजे लगा लिए, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं घर में, हर घर में बूफर है, डीजे लगा लिए, अपना उसी में बस लगा लिए मोबाइल से कनेक्ट की और गाना गाई, डांस की, बस हो गया। और जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी परंपराएँ सब विलुप्त होती जा रही हैं। उठान गीत तो फिर भी गा लेंगे लेकिन जो वो वाली सोहर रहती है, उसको कोई नहीं गाता। अच्छा, अच्छा। मुझे तो मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद नहीं कुछ रहता। हाँ, वही चीज़ तो मैं भी सबसे बोल देती हूँ। मैं सभी बहनों को बोल देती हूँ, आप जाइए मेरे चैनल पे, मैं विवाह गीत बहुत अच्छे-अच्छे विवाह गीत डाली हूँ, मेरी चाची के सब बताए हैं। वो यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे-ऐसे विवाह गीत डाली हूँ कि यूट्यूब पर भी आपको नहीं मिलेंगे। सब अपने वही आवत वाले विवाह गीत हैं। माता जी के भजन भी डाली हूँ पिछली नवरात्रि में, कुँवार वाली नवरात्रि में डाली थी। राम, 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 राम सिस्टर राम, राम। चंदा जाई बीरने, चंदा जइहा बीरने के देसवा कइहा हमरा संदेशवा ना। चंदा जइहा। लाइफ से आए हूँ तो चार्ज करना है। ठीक, 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंचन सिस्टर आप खाना ना बनाओ तो आप खाना बना लीजिए, चार्जिंग में लगा के मोबाइल ऑन कर दीजिए, थोड़ी देर मेरा भी सपोर्ट हो जाए। याद नहीं कर पाई हूँ। और ऊपर अभी छत पर आ गई थी टहलने के लिए, यहाँ पर मोबाइल लेके टहल लेती हूँ। नहीं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आराम से भजन गाते रहो, थैंक यू करने से अच्छा। हाँ भैया, कुछ लड़कियां गाती हैं लेकिन सब नहीं गा पाती हैं। वो वाला सोहर गीत गाती हैं जो अलग अलग गाया जाता है, जिसमें रहता है सासू जो आए चरुआ चढ़ाए वाला, वो वाला गा लेती है लेकिन वो वाला नहीं गाती है जो पहले वाले हैं। ये वाला आजकल के बच्चे ये वाला गाते हैं जो आजकल होता है, फिल्मी गाने के तर्ज पे बना के डाल देंगे, गा देंगी। और वो चरवा चढ़ाए, जितनी जो आए, पिपरी पिसाए, ये सब वाला तो गाती है लेकिन जो पुराने जमाने वाला है वो वाला नहीं गा पाती है। जैसे ये सब है, कौन सा है मुझे भी अभी कोई कोई सा और दिमाग में नहीं आ रही है। हरे हरे काली जमुनिया तो फरी के घा पसी जाती हूँ, फरी के घा पस जाती हूँ हो। जामुन तो होगा तोड़ने पियायो, ते नयन भरे देखित हो। रामचरितमानस का कोई चौपाई सुना दे। रामचरितमानस में तो भैया बहुत चौपाई है, सच कौन सा सुना दूं। सुशील लाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा।
शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। आशुतोष तुम यो घरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुना दी भैया रामचरितमानस की चौपाई। सुशीला लौट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जहि विधि मोहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। दिए बिनु देह न दिए बिनवारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। चाची जी हमारी मूवी के साथ बनी हुई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी। अरे जब हम अवध के हैं, प्रयागराज के हैं, अयोध्या के बगल के हैं, अगर हमको रामचरितमानस में नहीं रुचि रहेगी तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है भैया। भैया हमारे तो नल में भी गंगा जल आता है। मेरा घर गंगा जी के इतना किनारे है, नल में भी गंगा जल आता है। तो हम लोगों का तो मन एकदम पवित्र रहेगा ही भैया। अगर रामचरितमानस में नहीं रुचि रहेगी तो जीवन समझो व्यर्थ है। अच्छा, भगवान राम जी के ऊपर कोई कजरी गीत भैया भी याद तो नहीं, कजरी गीत मुझे आती नहीं है। अच्छा ठीक है, गा कर डालूंगी। भगवान रामचंद्र के चरित्र के बारे में तो सब याद ही है। मैं अपने आप से बनाकर कोई डाल दूंगी। अगर नहीं, अगर वैसे पूछूंगी अपनी मम्मी चाची लोगों से पूछूंगी, अगर उनको आता होगा तो उनसे सीख कर डाल दूंगी भैया। अगर नहीं आता होगा तो मैं भगवान राम के चरित्र पर अपने आप से बनाकर कोई डाल दूंगी। एक दो दिन में डाल दूंगी भैया। अच्छा सुनो भैया, रामचरितमानस पर सुना रही हूँ कजली गीत आपको। हनुमत कनक भवन, कैसे जन ब्या कैसे सिया पहिचन ब्याना। हनुमत कनक भवन, कैसे जन ब्या कैसे सिया पहिचन ब्याना। उड़े कैसे ज कई याद नहीं आ रहा है भैया, कल सुना दूंगी। कल मेरे लाइव में आना तो सुना दूंगी, अभी याद नहीं है।
हनुमत कनक भवन कैसे जने ब्या, कैसे सिया पहचने ब्याना। ठीक है भैया, ठीक है। हनुमत कनक भवन कैसे जने ब्या, कैसे सिया पहचने ब्याना। कैसे लो ब्यासिया के खबरिया, कैसे लंका जलो ब्याना, कैसे लो ब्यासिया के खबरिया, कैसे लंका जलो ब्याना। उड़ के जावे, उड़ के जावे लंका नगरिया। याद नहीं आ रहा है अभी। कुछ नहीं करती हूँ भैया, मैं हाउस वाइफ हूँ। करती कुछ नहीं हूँ। नहीं भैया, कोई टैलेंट नहीं है मेरे अंदर। मैं अधम सखा सुनो पर रघुबीर। कोई नहीं भैया, कोई नहीं लिखता। अभी तो भैया, अभी मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ, बस वही से जो गीत आते हैं जो सीखी हूँ बचपन में, वही डाल देती हूँ गा के। मेरा चैनल नहीं मोनो हुआ है भैया, बस ऐसे गा के डाल देती हूँ। फेमस नहीं हूँ भैया। मेरे चैनल पर जाना, कल सुनना, उसके बाद आना भैया। मैं सुबह 11 बजे भी लाइव आती हूँ और शाम को 8 बजे। हाँ भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सुनना, सुन के बताना। माता बहुत नीचे आप जाएंगे, जब पिछले साल के सितंबर अक्टूबर में तो माता जी के भजन बहुत अच्छे अच्छे डाली। उसके बाद तो विवाह गीत डाली। कल एक भजन डाली हूँ, आज कजरी गीत डाली हूँ। सुनना, सुन के बताना कैसे लगते हैं मेरे भजन। कल सुबह 11 बजे लाइव आते हो। 11 अगर टाइम हो तो 11 बजे वाली लाइव में आना, तो बताना भैया।
ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक, वो वही ज्यादा भैया, हमारा कंटेंट वही है, ये तो लाइव तो एक मजबूरी है। मेरा 1 साल पूरा हो गया तो कुछ मैंने बताया कि लाइव आओ, तो वॉच टाइम मेरा नहीं पूरा हुआ, सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए बट वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ है। तो कुछ बहनें बताई हैं कि जो है लाइव करो तो वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, इसी वजह से अभी मैं जो है मेरा 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद मैं शुरू की हूँ लाइव आना। 2 महीने हुआ लाइव करते, अभी 2 महीने भी नहीं हुआ होगा, 1 डेढ़ महीने हुआ है। इससे पहले मैं लाइव नहीं करती थी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना कीमती समय दिया। ठीक है भैया। धन्यवाद भैया, थैंक यू। गुड नाइट भैया जी। शुभ रात्रि। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे भैया जी, जय श्री राम। ठीक है भैया, ठीक, रात बहुत हो गई, सो जाओ भैया जी। जय श्री राम भैया जी, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। अच्छा अच्छा, शॉर्ट वीडियो सुना है भैया, हाँ भैया आज ही डाली हूँ कजरी की, अभी एक ही डाली हूँ। डालूंगी इधर, इधर रोज डालूंगी कजरी। अब सावन आ रहा है ना भैया, अब डालूंगी रोज। एक मिनट घटेगा तो बेटी मोरे ससुरे बाटी गंगा के मिनट घटेगा तो बेटी मोरे नहीं हरे आए। शुभ रात्रि भैया जी, शुभ रात्रि। जय श्री राम, राधे राधे। था अचानक आपको आ गया तो मैं कैसे संकेत देखता हूँ कि देखा आप लाइव पे कुछ बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए और इतना कीमती समय दिए भैया। आप मेरे कजरे गीत सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी जो गीत हो भैया लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। मैं अपने किसी भाई बहन को विवश नहीं करती हूँ मेरे भाई, अगर आपको पसंद आए मेरे गीत तो लाइक जरूर कर देना भैया, और अगर ना पसंद आए तो ना करना।
वैसे आप मेरे अवध के भाई हैं तो आपको अवधी गीत पसंद जरूर आएंगे। जितना डाली हूँ विवाह गीत और जो भी गीत डाली हूँ सब अवध के ही हैं, सब अवधी गीत ही डाली हूँ। सुनो सुनो भैया लक्ष्मण रथे सजेवा रथे सजेवा भैया सीता का रथ बैठाई जंगल छोड़िया सुनो सुनो भैया लक्ष्मण रथ सजेवा रथ सजेवा हो भैया सीता का रथ बैठाई जंगल छोड़िया हो भैया सीता का रथ बैठाई जंगल छोड़िया थरे थरे कांपे भैया लक्ष्मण राम से अरज करे राम से अरज करे हो भैया नाई महीना भौजी गर्भ जंगल कैसे रही। मैं लाइक कमेंट कर दूंगा, आप मेरे कमेंट का जवाब देना। ठीक 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 भैया, मैं भैया कमेंट पे सब सारे कमेंट पे रिप्लाई देती हूँ। किसी का भी कमेंट आता है भैया कमेंट पे रिप्लाई जरूर देती हूँ। इग्नोर नहीं करती हूँ किसी कमेंट को। भैया लक्ष्मण राम से अरज करे राम से जे करई हो भैया तीज कर दे भागी जंगल कैसे रही है जंगल कैसे रही है हो भैया सीता का हरे राजा राम लंका मारा कमारा खई हो भैया सीता का हर राजा राम धोबिया बोली बोल धोबिया बोली बोली हो भैया बोली लगी है जैसे बाण सरिखे नहीं त्याग सरिखे हो भैया बोली लगी है जैसे बाण सरिखे त्याग सीता का रथ बैठाई जंगल छोड़िया जंगल छोड़िया सीता का रथ से उतार उलटी नहीं चित उलटी नहीं चित को सीता जी देखे ऋषि वाले मीक की कुटिया कुटिया रिंगिया कुटिया रे
आए हो बेटी के है कया हुए तू धेरिया तो के है के बहुरिया हो। बेटी कौन संकट तोरे पड़ेगा जंगले बिचे रोयू जंगले बिचे रोयू बेटी कौन संकट तोरे पड़ेगा जंगल बिचे रोयू हो। बेटी कौन संकट तोरे पड़ेगा जंगल बिचे रोयू जंगल बिचे रोयू। डोल मिर्ग नहीं डोल मिर्ग नहीं डोल डोल वही बने रहे बाबा मोर उलटी नहीं चिते उलटे नहीं चिते सब मची आई बैठी है सासु तो बहू आया रज करे बहू आया रज कर हो सासू कौन बरने मोरी माया तो कौन बपया है कौन बपया ओ सासू कौन बरने मोरी माया तो कौन बपया है। ओ सासू कौन बरने बिरन भैया उलटी नहीं चित उलटी नहीं चित इटिया बरने तोरी माया तो पथरा बपैया है पथरा बपैया है हो बहू लोहोवा बरने बिरन भैया उलटी नहीं चित में उलटी नहीं चित में तनी बचने सुने बहुआ तो मने मधुखिते भाई मने मधुखिते भाई हो सासु गंगा बरने तनी बचने सुने बहुआ तो सासु से जे करई सासु से जे करई हो सासु गंगा बरने मोरी माया तो यमुना बपैया है यमुना बपैया है ओ सासु सरे यु बरने बीरन भैया उलटी चित उलटे नहीं चित हरे हरे नागर के कहाँ रबे गाए चले आवा बोलाए चले आवा ओ करा थाले भेले डड़िया फंदावा नहीं हरे पहुँचा नहीं हरे पहुँचा एक बने गई है दूसरे बने तीसरे माँ भैया बने तीसरे माँ भैया बने हो भैया की मोरी
माया जी मरी गई बपाई बिसरी गए हो भैया की मोरी माया जी मरी गई बपाई बिसरी गए हो की मोरी माया जी मरी गई बपाई बिसरी गए बपाई बिसरी गए हो कि तुम भौजी के मते महू लटी नहीं चितया लटी नहीं चितया हो ना तोरी माया जी मरी गई बपाई बिसरी गए बपाई बिसरी गए हो नीना हमें भौजी के मते महू लटी नहीं चिताए उलटी नहीं चिताए लाया तो तोहरी बुढ़ाई गई बपाई जा पले भाई बपाई जा पले भाई हो बहनी हमेरो तो बुद्धि लरे कैया उलटी नहीं चिताए उलटी नहीं चिताए हो बहनी हमेरो तो बुद्धि लरे कैया उलटी नहीं चिताए उलटी नहीं चिताए हो माया तो तोहरी बुढ़ाई गई बपाई जा पल भय बपाई जा पल भय हो बहनी हमारा तो बुद्धि लरे कैया उलटी नहीं चिताए उलटी नहीं चिताए किन्नी मोरी माया जी मरी गई बपाई बिसरी गए बपाई बिसरी गए हो भैया कि तुम भौजी के मते महू लटी नहीं चितया उलटी नहीं चितया लटी नहीं चितया नहीं चितया गया कि कहाँ गए देखे मत लटी जीरो अच्छी शो कर रहा है कोई है नहीं क्या लाइव में सब लोग चले गए क्या
मोट सुंदर सिरंगा नयनती निमित देख भजंगा शिव शंकर की मिलनी मोह तन सती बेटे बिना तन सती बेटे बिना तन सती बेटे नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे जे बिनु दीन दे बिन रीत नाथ पुरुष बिनु नारे जे बिनु दीन दे बिन जे बिनु देविना दे बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी सो तुम जान प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हर्षित तारी हारी देव रूप निहारी लोचने अभिरामा तनु घने श्यामलोचने अभिरामा तनु घने श्यामा रोदन ठाना प्रयास करना देवत रूप निहार जिया गिरन संदेश जय वीरन के दशवा हमरो संदेश
कान के बाल कैसे है मेरा, कोई से पिया पहचान के साथ समुद्र
बहुत बहुत धन्यवाद पलक बेटा। धन्यवाद पलक बेटिया। बेटा थैंक यू लाइव में आने के लिए, आपका स्वागत है बिटिया रानी। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बिटिया रानी। बहुत देर में आई बिटिया रानी, 8 बजे लाइव आती हूँ, 8 बजे से आ जाया करो। दिन में 11 बजे भी आती हूँ और रात में 8 बजे भी आती हूँ। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही बिटिया? मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, सब लोग सो रहे हैं। मोबाइल में जो है बैटरी नहीं है। मोबाइल में बैटरी नहीं है बेटा, और सब लोग सो रहे हैं कमरे में आके। अभी आए हो, अभी तक तो छत पर चली गई थी तो वहां से बातें कर रही थी। रुको, अच्छा बेटा रुको, मैं चार्जर लेके छत पर चल रही हूँ तो वहां से बात करती हूँ। ये यहाँ इन लोगों की नींद खराब हो जाएगी, सुबह स्कूल जाना रहता है। ऊपर चल रही हूँ छत पर, तो वहीं से बात करेंगे। और पलक बेटा, कभी मेरे चैनल पर गई हो कि नहीं गई हो तुम? मैं तो जब लाइव नहीं आती थी तो हमेशा जाती थी तुम्हारे चैनल पर। इस टाइम लाइव जब से आने लगी हूँ, जा ही नहीं पा रही हूँ। लाइव लाइव के चक्कर में पूरा दिन उनके लाइव में करते करते चैनल पे पहुंच ही नहीं पाती। जब मैं लाइव नहीं आती थी तो मैं सबके चैनल पर जाती थी। तुम्हारा डांस खूब देखी हूँ। डांस अच्छा कर लेती है बिटिया रानी। अच्छा, मम्मी देखती है। कहाँ से हो बिटिया रानी? घर कहाँ है तुम्हारा? पलक, घर कहाँ है तुम्हारा बिटिया? मम्मी से बोलना विवाह गीत में बहुत अच्छे अच्छे विवाह गीत डाली हूँ अपने आवाज में गाने वाले। और मेरा अगर विवाह गीत सीखेंगी तो उनको जो है पूरे यूट्यूब में, मैं खुद देखी हूँ जो विवाह गीत डाली हूँ, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे। कुछ तो है यूट्यूब वाले, कुछ मिलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो विवाह गीत है। अच्छा, जौनपुर से। ठीक 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 बिटिया। जौनपुर से तो वंदना जी भी है ना? वही घनश्यामपुर से हो क्या? जौनपुर में जहाँ वंदना का स्टूडियो है, वहीं पर मेरी एक बहन की शादी हुई है। उस गांव में तिवारी है, तिवारी के यहाँ हुई है। मेरे बहन के घर के पीछे एक वो है, तालाब जैसा है। गढ़ही गढ़ही बोलते हैं ना गाँव में। तो गढ़ही के बगल में है इनका वंदना का स्टूडियो। बेटिया में प्रयागराज से है। मैं प्रयागराज से, मेरे मामा की लड़की की शादी हुई है वही घनश्यामपुर में, बदलापुर घनश्यामपुर में। तुम्हारा कहाँ घर है बिटिया? अच्छा, जौनपुर सिटी से हो बेटा। ठीक 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 बिटिया रानी। अच्छा अच्छा, वंदना वंदना आंटी को तो सभी जानते हो, तो फेमस हो गई ना बिटिया, उनकी तो वीडियो बहुत वायरल है। अच्छा 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 बेटा। हाँ, उनके पास तो बहुत भीड़ लगती है, अच्छा सपोर्ट भी करती हैं सभी बहनों का। वंदना जी के अंदर कोई ईगो, कोई घमंड नहीं दिखता है।
जैसे लोग फेमस हो जाते हैं तो अपने आप में घमंड करते हैं। अब हो सकता है भाई, अब मैं तो बस उसी पर देखी हूँ, चैनल पर देखी हूँ बेटा, अंदर की बात तो जानती नहीं हूँ, लेकिन वैसे देखने में लगता है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार रखती हैं। अच्छा अच्छा बेटा, रेखा तुम्हारी मौसी है? अच्छा, और रेखा जी ज्वाइन है? रेखा जी बनारस में रहती है ना रेखा? पलक बेटा, रेखा उपाध्याय बनारस में रहती है ना? कमेंट करके बताओ। एक रेखा उपाध्याय मेरे साथ जुड़ी हैं, वो शायद बनारस में रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डीपी पर ब्लू साड़ी है शायद उनकी। डीपी जो लगी है ब्लू साड़ी में है, स्काई ब्लू में, जैसे बाय बाय वाली इमोजी में हाथ का कलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो जुड़ी है मेरे साथ, लेकिन मैं उनकी लाइव में जा नहीं पाती हूँ, चैनल पर भी नहीं पहुंच पा रही हूँ आजकल तो लाइव के चक्कर में। और किस क्लास में पढ़ रही हो बिटिया? मतलब बेटा किस क्लास में पढ़ रही हो? अच्छा, 8 में हो बेटा, हाँ होगी, छोटी ही हो अभी। चलो ठीक है बिटिया, इसके अलावा भी बढ़िया पढ़ाई में अच्छे से मन लगाओ, यूट्यूब तो चलता रहेगा। अभी तुम्हारे लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट ही डालती हो बेटा कि फुल भी डालती हो? जब मैं, अभी तो इधर तो मैं 8-10 दिन से नहीं गई हूँ तुम्हारे चैनल पर, जब मैं जाती थी तो उस टाइम तो वही डालती थी, साड़ी वाड़ी भी पहन कर डाली हूँ, एक पिंक साड़ी में डाली हूँ। मैं बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारे से के लायक देवी गीत खूब अच्छे अच्छे डाली, और तुम्हारी मम्मी के लायक विवाह गीत, सोहर भी कुछ डाली, विवाह डाली हूँ, कवन, पहले गाँव में गवन होता था, गवन गीत भी डाली हूँ, विवाह गीत भी डाली हूँ। लटका उटका नहीं डालती हूँ, लटका उटका मुझे थोड़ा कम अच्छे लगते हैं। जैसे घर में भैया, भाई, माँ बाप, भाई बहन सभी सुनते हैं तो लटका उटका में थोड़ा उटपटंगा रहता है ना, तो इसलिए मैं लटका गीत नहीं डालती हूँ। वही गाना डालती हूँ जो सबके साथ बैठकर सुना जा सके। मैं वही डालती हूँ बेटा। पढ़ाई में खूब मन लगाया करो बिटिया रानी। अभी से अगर पढ़ाई में मन लगाओगी तो आगे आगे फायदा करेगा। नींव अगर मजबूत रहती है बिटिया तो अपने आप मकान सीधा रहता है, अगर नींव टेढ़ी हो गई तो कभी भी मकान सीधा नहीं हो सकता बेटा। खुश रहो बिटिया रानी, खुश रहो, आनंद रहो बिटिया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। गुड नाइट बिटिया रानी, खुश रहो, आनंद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो मेरी बिटिया रानी। खूब पढ़ो लिखो, ऊंचाई पर पहुंचो।